today we shall study the linear differential equation have a special character, simultaneous linear differential equation. Simultaneous linear differential equation is a linear differential equation in which there are two dependent variable and one independent variable. आज हम आप लोगों को बताएंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी तक आपने जो पढ़ा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते थे जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। लेकिन ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कहलाता है simultaneous differential equation. So we can say, we can write the definition. A differential equation containing one independent variable and two or more than two dependent variable with its derivatives is called simultaneous linear differential equation. यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो उनके डेरिवेटिव के साथ में, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, let us take x and y are two dependent variables and small t be an independent variable. Then the set of differential equations dx upon dt plus 5 dy upon dt plus y is equal to sin t d 3 dy upon dt plus 7 dx upon dt plus x is equal to e to the power t. This set of equation is called simultaneous linear differential equation. Other examples are
dx upon dt plus y is equal to e to the power t, dy upon dt plus x is equal to sin t cos t. This is also linear example. These are the examples, etc. There are so many examples in which x and y are two dependent variable and t is independent variable, and these set of equations are called simultaneous linear differential equation. Now, what is procedure? What is procedure to solve such type of, what is the method to solve such type of differential equation? It is very easy. Whenever you are going to solve such type of differential equation in which x and y are two dependent variable and t is independent variable, then your first step is to eliminate either x or y from these two equations. If we eliminate either x and y, suppose I am going to eliminate x from these two equations, then we can get an equation containing y and its derivative, and that equation is a linear differential, becomes the linear differential equation with constant coefficient and which can be solved easily. So write down the steps of methods to solve such type of differential equation. So I am going to discuss with the method to solve linear differential equation with constant coefficient. You know, when you solve the linear differential equation with constant coefficient, you need to write auxiliary equation, complementary function and particular integral. So we first try to solve the simultaneous linear differential equation. By elimination process, we can get a linear differential equation with constant coefficient, and then we can get, by getting auxiliary equation, complementary function and particular integral, the required solution. Let us discuss with the method to solve simultaneous linear differential equations. Step 1. First we eliminate either of two dependent variable, either one of, we can say first we eliminate one of the given two independent variable x and y, and then we find a differential equation containing one dependent and one independent variable which can be solved easily by
previous methods. Suppose step number 2. Suppose after step 1, we get reduced linear differential equation, for of linear differential equation with constant coefficient. Then by getting auxiliary equation, complementary function and particular integral, we can get the required solution. Now we consider an example, and this example will help you in doing the questions. And this example solve the simultaneous differential equation dx upon dt, du plus dy upon dt plus 3x is equal to sin t, dx upon dt plus y minus x is equal to cos t. I told you, मैंने आपसे बताया था कि जब भी सॉल्व करना हो इसमें, तो इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनको किसी न किसी प्रोसेस से, जो आपने चाहे आप एलिमिनेशन प्रोसेस जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, और इसमें से एक या तो y गायब किया जाए या तो x गायब किया जाए। अगर हम y गायब करें या x गायब करें, उसके लिए आपको जितने कोई भी तरीका हो आप उसको एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि इसको पहले हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें तो यहाँ लिख दिया जाए, अगर इसको इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ लिख दे कि टू सॉल्व द इक्वेशंस 1 and 2, we first eliminate y and its derivative, from 1 and 2. For this we differentiate equation 2 with respect to t. we get जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को, you will get d2x upon dt square plus dy upon dt minus dx upon dt is equal to d by dt cos t is minus sin t. ये मिल गया हमको। एंड देन subtracting equation 1 from above,
एंड फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम एबव, इसमें से ये 1 को घटा दें तो हमारा इसको एक बार और लिखते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt माइनस dx upon dt is equal to minus sin t. This is the above equation, and from one is dx upon dt plus dy upon dt minus plus 3x is equal to sin t. Just I am subtracting, यहाँ पर लिखा जाएगा subtraction करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, dy अपॉन dt से dy अपॉन dt कट गया, यहाँ dx अपॉन dt माइनस में है, यहाँ भी dx अपॉन dt माइनस में है, और यहाँ d2x अपॉन dt स्क्वायर है तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स dx अपॉन dt माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस sin t इज माइनस 2 sin t. तो d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 2 dx अपॉन dt माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2 sin t. अब ये इक्वेशन जो है आपका इक्वेशन नंबर 3 ले लिया जाए. अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें तो यह इक्वेशन में सिर्फ x है और आपने y को इलिमिनेट कर दिया. अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. क्योंकि ये जो इक्वेशन मिला है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक आपका डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन 3. This equation 3 is linear differential equation with constant coefficient. So auxiliary equation पहले हम लिखेंगे. So we write first d by dt is equal to capital D. We get मिलेगा हमको d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3x is equal to minus 2 sin t. And then we write auxiliary equation. I used to write a equation. Auxiliary equation is m square minus 2m minus 3 is equal to 0, or m square minus 3m plus m minus 3 is equal to 0. m is may be taken out, m minus 3 plus 1 taken out, m minus 3 is equal to 0, or m plus 1 m minus 3 is equal to 0, and this implies m is equal to minus 1 and 3. So complementary function is cf is equal to c1 e to the power minus t plus c2 e to the power 3t. ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया. अब हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो pi is 1 upon d square minus 2d minus 3 into minus 2 sin t, and this can be written as minus 2 1 upon d square minus 2d minus 3 sin t, and using 1 upon f of d square sin t sin at is equal to 1 upon minus a square sin at if f of minus a square is not equal to 0. So using this fact, we can write this is equal to minus 2 1 upon minus 1 minus 2d
-1 -2d -3 sin t, और pi may be written as -2 into 1 upon minus is taken common 2d plus 4 sin t, or we can say -2 is again taken common, to -2 cancel 1 upon d plus 2 sin t, or after multiplying d minus 2 in the numerator and denominator, it is d minus 2 upon d square minus 4 sin t. Again using the same rule, we can say d minus 2 upon -1 minus 4 sin t. So we can get particular integral is -1 upon 5 d sin t minus 2 sin t. What is d sin t? D sin t is d by dt of sin t. So it is -1 by 2, 1 by 5 into cos t minus 2 sin t. So solution is x is equal to CF plus PI. So x is equal to CF is C1 e to the power minus t plus C2 e to the power 3t minus 1 upon 5 cos t minus 2 sin t. This is taken as equation number 4. This equation 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 2 में रख दें तो आसानी से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 we get y is equal to x plus cos t minus dx upon dt. So y is equal to x using equation 4. यहाँ x की वैल्यू है c1 e to the power minus t plus c2 e to the power 3t minus 1 upon 5 cos t minus 2 sin t plus cos t minus dy dx upon dt. Thereby we have to differentiate this equation 4 with respect to t. So here is c1 minus c1 e to the power minus t plus 3c2 e to the power 3t minus 1 upon 5 cos t differentiated with respect to t, it is minus sin t minus 2 sin t is differentiated with respect to t, it is cos t. So when we simplify this, c1 plus c1 is plus c1, 2c1 e to the power minus t minus c2, and here is c2, it is minus 2 c2 e to the power 3t, and here is minus minus plus and again is minus, so it is minus 2 upon 5 minus, now we can say minus 1 upon 5 cos t plus 2 upon 5 sin t plus cos t, and this minus is plus, so it is minus 1 upon 5 sin t minus 2 upon 5 cos t. So simplifying this, we can get 2c1 e to the power minus t minus 2c2 e to the power 3t. यहाँ देखा जाए तो ये minus 1 by 5 cos t और cos t, ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ से देखने पहले ये 2 by 5 cos t और minus 1 by 5 cos t, तो minus 3 by 5 cos t हो जाएगा, minus 3 by 5 cos t और प्लस cos t कर लिया जाए, और प्लस यहाँ 2 by 5 sin t है, minus 1 by 5 sin t है,
it is 1/5 sin t, और आंसर इज नाउ y is equal to 2c1 e to the power minus t minus 2c2 e to the power 3t, यहाँ से घटेगा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5 cos t plus 1/5 sin t, and this is taken as equation number 5. This equation 4 and 5 are the solution of required solution, we can say. This equation 4 and 5, these equations 4 and 5 are required solution. तो इस तरह से हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से आप एक एग्जाम्पल बता दिया, इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रॉब्लम होता है उसको जूम क्लासेस पे आप पूछेंगे। इट्स ऑल टुडे एंड टुमारो वी विल बिगिन विद द न्यू chapter known as linear differential equation with of second order. Thank you.